Good morning, friends. We are studying cardiovascular system, and in cardiovascular system, we are studying with the structure of heart. In so far, we have seen the covering of the heart, then wall of the heart, then chamber of the heart, and then walls of the heart and स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट। हम लोगों ने देखा कि जो हार्ट का कवरिंग होता है उसी को पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके दो लेयर्स होते हैं, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इसके बाद हमने देखा कि वॉल ऑफ द हार्ट, उसमें हार्ट वॉल के तीन लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। उसमें मायोकार्डियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्डियक मसल टिश्यू सिर्फ मायोकार्डियम में होता है। चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, हम लोगों ने देखा कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इस तरह से चार चेम्बर्स हार्ट में होते हैं। उसके बाद हमने देखा वॉल्स ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है पल्मोनरी वॉल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है माइट्रल वॉल, उसी को बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होती है एओर्टिक वॉल। ये चार वॉल्स हार्ट में होते हैं। फिर देखा स्पेशल जंक्शनल टिश्यूज ऑफ द हार्ट, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजेस फाइबर्स, ये जो है वो स्पेशल जंक्शनल ऑफ टिश्यूज ऑफ द हार्ट हैं। उसमें एक पेसमेकर होता है, नॉर्मल पेसमेकर जो है वो ऐसे नोड है। इन सब एटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं, इसमें एटोरिदमिसिटी होती है, इसलिए हार्ट बीट जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम या हार्मोन के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये खुद के भी हो जाते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन तो अभी तक रचना के बारे में थी। हमें देखना है क्रिया, हृदय क्रिया, फंक्शंस ऑफ द हार्ट, and function is always related with the structure, so we should not forget the structure before to study the function. Main function of the heart is cardiac cycle, heartbeat। तो इसमें चार फंक्शंस होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। इनको लगने वाला समय है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को 0.1 सेकेंड लगता है, एट्रियल रिलैक्सेशन को 0.7 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को 0.3 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को 0.5 सेकेंड लगता है। तो ये टोटली एट्रियल फंक्शन हो गए 0.8 सेकेंड के और वेंट्रिकुलर फंक्शन हो गए 0.8 सेकेंड के। तो एट ए टाइम ये दोनों क्रिया चालू रहती हैं। इसमें हमें एक बात याद रखना चाहिए कि अगर हमने 1 मिनट में हार्ट बीट रेट जो है 75 पर मिनट कंसिडर किया तो एक हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकंड का हो जाता है। उस 0.8 सेकंड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। देन व्हाट इज कार्डियक साइकिल? A single cardiac cycle includes all the events associated with one heartbeat. Thus, a cardiac cycle consists of systole and diastole of the atria plus systole and diastole of the ventricles. ये क्यों होते हैं? Pressure and volume changes during cardiac cycle. In each cardiac cycle, the atria and ventricles alternately contract and relax, forcing blood from the areas of higher pressure to the areas of lower pressure. As a chamber of heart contract and blood pressure within it increases. तो कार्डियक साइकिल में
जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो इस चीज़ के आधार पर होता है कि उसके अंदर प्रेशर कितना है। वो एक क्लोज कंटेनर है, उसमें ब्लड का जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर कम ज़्यादा होता है। और हम लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ब्लड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। ईच वेंट्रिकल however expel the volume of blood per bit. The same pattern exists for the both pumping chambers. When heart rate is 75 beats per minute, a cardiac cycle lasts for 0.8 seconds. To examine and correlate the events taking place during a cardiac cycle. Cardiac cycle can be studied in 3 steps: atrial systole, ventricular systole और relaxation period. इसमें रिलैक्सेशन पीरियड जो होता है उसमें दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल एट ए टाइम रिलैक्सेशन पीरियड में होते हैं। पहले एट्रियल सिस्टोल, ड्यूरिंग एन एट्रियल सिस्टोल विच लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। डीपोलराइजेशन ऑफ द एसए नोड कॉजेज एट्रियल डीपोलराइजेशन मार्क बाय द पी वेव इन द ईसीजी। हम ईसीजी देखेंगे, जब एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाती है तो उसमें पी वेव आ जाती है। Atrial depolarization causes atrial systole. As the atria contract, they exert pressure on the blood within which forces blood through the open atrioventricular wall into the ventricle. Atrial systole contribute a final 25 ml of the blood to each ventricle, which was 105 ml of the blood. Ventricle में 105 ml ब्लड होता है, उसमें एट्रियल सिस्टोल के बाद 25 ml ब्लड ऐड हो जाता है। एज पर कार्डियक साइकिल, एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल इज आल्सो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हियर बोथ ऑफ द वेंट्रिकल कंटेन 130 ml ऑफ द ब्लड एंड दिस वॉल्यूम इज नोन एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 105 ml ब्लड में 25 ml ब्लड ऐड करने के बाद वो होता है 130 ml ब्लड, इसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जब हम ईसीजी देखेंगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी वजह से वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन क्लियर हो जाता है, उस वक्त वो वेव्स आ जाती है। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड, द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम द एट्रिया आर रिलैक्स इन एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कॉजेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। As ventricular systole begins, pressure rises inside the ventricles and push blood up against the atrioventricular walls, forcing them shut. For about 0.05 seconds, all 4 walls are closed, and this period is called isovolumetric contraction, in which all 4 walls are closed. Then continued contraction of the ventricle causes pressure inside the chambers to rise sharply. When left ventricular pressure surpasses aortic pressure at about 80 mm of mercury and right ventricular pressure rises above the pressure in the pulmonary trunk 20 ml of the millimeter of mercury, both semilunar valves open. Here the pulmonary valve and aortic valve are the semilunar valves. At this point, ejection of the blood from the heart begins. Here, semilunar valves open and ventricular ejection starts. The pressure in the left ventricle continues to rise to about 120 mm of mercury, whereas the pressure in the right ventricle climbs to about 25 to 30 mm of mercury. The left ventricle ejects about 70 ml of the blood into the aorta, and right ventricle ejects the same volume of the blood into the pulmonary trunk. The volume remaining in two ventricles is 60 ml and is called as the end systolic volume. Here in the ECG, the T wave, we remark the situation. Now relaxation period. During the relaxation period, which lasts about 0.4 seconds, the atria and the ventricles are both relaxed. As the heart beats faster and faster, the relaxation period becomes shorter and shorter. Ventricular repolarization causes ventricular diastole. As the ventricles relax, pressure within the chambers falls and blood in the aorta and pulmonary trunk begins to flow backward toward the region of lower pressure in the ventricles.
Backflowing of the blood catches in the valves cups and close the semilunar valves. Now aortic valve closes at the pressure of 100 mm of mercury. Here again all valves are closed and this period is known as isovolumetric relaxation. As ventricles continues to relax, the pressure falls quickly. When ventricular pressure drops below atrial pressure, the atrioventricular valves open and ventricular filling begins. At the end of relaxation period, the ventricles are about 3/4 full. Here P wave appears on ECG. इसके बाद अब हम देखते हैं हार्ट साउंड के बारे में. अभी तक हमने देखा कार्डियक साइकिल. एक बीट में जो भी चेंजेस हार्ट में होते हैं वो नेक्स्ट बीट में भी होते हैं, उसके नेक्स्ट बीट में भी होते हैं. दिस गोज इन द साइक्लिकल मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल. तो इसमें 4 चीजें होती हैं: एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. ये हमें याद रखनी है. और उसको लगने वाली समय, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को लगते हैं 0.1 सेकेंड, एट्रियल रिलैक्सेशन को लगते हैं 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को लगते हैं 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को लगते हैं 0.5 सेकेंड्स. तो इसकी टोटल जो होती है वेंट्रिकुलर एक्टिविटी की 0.8 सेकेंड, एट्रियल एक्टिविटी की 0.8 सेकेंड, अगर आपने 75 बीट्स पर मिनट कंसिडर किया तो. अब हम देखते हैं हार्ट साउंड्स. आप लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हो, तो स्टेथोस्कोप जब आप चेस्ट पर रखते हो तो वहाँ पर आप हार्ट साउंड कैसे सुनते हो और क्यों हार्ट साउंड क्रिएट होते हैं. उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन इज द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू साउंड विद इन द बॉडी and it is usually done with the stethoscope. The sound of the heartbeat comes primarily from the blood turbulence caused by the closing of the valves. During each cardiac cycle, there are 4 heart sounds are there, but in a normal heart, only the first and second heart sound, S1 and S2, are loud enough to be heard by listening through stethoscope. 4 heart sound होते हैं लेकिन सुनाई 2 ही देते हैं. The first heart sound, which can be described as love, here sorry it is wrongly, it has been written dove, it is love, is louder and bit longer than the second sound. S1 is caused by the blood turbulence associated with the closure of atrioventricular valves soon after the ventricular systole begins. The second sound, S2, which is shorter and not as the first, can be described by dove sound. S2 is caused by the blood turbulence associated with the closure of the semilunar valves at the beginning of ventricular diastole. Although S1 and S2 are due to the blood turbulence associated with the closure of valves, they are best heard at the surface of the chest. तो ये वॉल्स जहाँ पर होते हैं वहीं पर वो साउंड नहीं सुने जाते हैं. थोड़ी सी उसकी अलग जगह होती है जहाँ पर वो बेस्ट सुने जाते हैं, वो जगह थोड़ी सी अलग है जो फिगर में या प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल है. इन लोकेशन दैट आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द वॉल्स, नॉर्मली not loud enough to be heard. S3 is due to the blood turbulence during the rapid ventricular filling and S4 is due to the blood turbulence during the atrial systole. Now just remember heart murmurs. When these valvular sounds are abnormal, you can listen it with the help of stethoscope. तो हमें हार्ट मर्मर सुनाई देते हैं, वो क्यों आते हैं? हार्ट साउंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ द हार्ट. A heart murmur is an abnormal sound. Some heart murmurs are innocent, meaning they are not associated with the significant heart problems. Most often a murmur indicates a valve disorder. When heart valves exhibit stenosis, the heart murmur is heard. Here the valve should be fully open, but it is not. Although heart has autorhythmicity, अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. रिमेंबर, ऑल्दो हार्ट हैज autorhythmicity, its operation is governed by the events occurring in of the body. All body cells must receive a certain amount of oxygenated blood a minute to maintain health and life.
Cells are metabolically active as during exercise they even need more oxygen from the blood. During rest period, metabolic need is reduced and the workload of the heart is also reduced. Now the cardiac output is the volume of blood ejected from the ventricles into the aorta each minute. Cardiac output equals the stroke volume and volume of the blood ejected by the ventricle during the contraction multiplied by the heart rate of the heartbeat. Heartbeat rate is 75 beats per minute and stroke volume is 70 ml per beat. So here cardiac output becomes 5 liters. Try to understand cardiac output का मतलब है 1 मिनट में हार्ट से बाहर कितना ब्लड जाता है. तो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाता है एओर्टा में. वो कितना जाता है? तो एक बीट में 70 ml ब्लड जाता है. तो एक बीट में अगर 70 ml जाता है तो एक मिनट में 70 into 75 इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स. तो वो कार्डियक आउटपुट हो गया. नाउ फैक्टर्स दैट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट नॉर्मली इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट. During mild exercise, stroke volume may increase to 100 ml per beat and heart rate to 100 beats per minute. Then cardiac output will be 10 liters per minute. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो 5 लीटर का कार्डियक आउटपुट 10 लीटर्स हो जाता है. ड्यूरिंग इंटेंस बट स्टिल नॉट मैक्सिमम एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हो तो हार्ट एक्सेलरेट टू 150 beats per minute and stroke volume may be 130, here again wrongly written 130 ml of the beat, providing cardiac output of the approximately 20 liters per minute. तो 5 लीटर का थोड़ी एक्सरसाइज के बाद 10 लीटर हो जाता है और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो 20 लीटर तक जा सकता है. तो कार्डियक रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन्स मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट. आप जब आराम कर रहे हो तो आपका कार्डियक आउटपुट कितना होता है? जनरली वो 5 लीटर होता है और मैक्सिमम के आपका कितना बढ़ता है एक्सरसाइज के बाद, उसका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं कार्डियक रिजर्व. कार्डियक रिजर्व इज 4 or 5 times more than the resting value is average. Athletes may have cardiac reserve 7 or 8 times their resting cardiac output. People with severe heart disease may have little or no cardiac reserve, which limit their ability to do even a simple task of living. जिनको हार्ट डिसीज होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट उतना कुछ भी नहीं होता है. Now normally heart will pump out the blood that enters the chamber during last systole. At rest, stroke volume is 50 to 60% of the end diastolic volume because 40 to 50% of the blood remains in the ventricle after each contraction and is called as systolic volume. अब ये कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है और हार्ट रेट जो होता है उसके ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड होता है. उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है: प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड. नाउ व्हाट इज प्री लोड? प्री लोड इज डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑन हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स. देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी? द फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स. What is afterload? The pressure that must be exceeded before ejection of the blood from ventricles can occur. Now, about preload. A greater preload on cardiac muscle fibers prior to the contraction increases their force of contraction. Preload can be compared to the stretching of rubber band. The more the rubber band is stretched, more forcefully it will snap back. Within limits, more heart fills with the blood during diastole, the greater the force of contraction during systole. This relationship is known as Frank Stirling's law of heart. The preload is proportional to the end diastolic volume, the volume of blood that fills the ventricle at the end of diastole. Normally, greater is the end diastolic volume, the more forceful is the next contraction. The two key factors determine end diastolic volume. Number 1 is duration of the ventricular diastole and number 2 is venous return, the volume of blood returning to the right ventricle.
आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो आता है सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से आता है. When heart rate increases, the duration of diastole is shorter. Less filling time means a smaller end diastolic volume, and the ventricles may contract before they are adequately filled. By contrast, when venous return increases, a greater volume of blood flows into the ventricles and the end diastolic volume is increased. When heart rate exceeds about 160 beats per minute, stroke volume usually declines due to the short filling time. At such a rapid heart rate, end diastolic volume is less and the preload is lower. People who have slow resting heart rates usually have larger resting stroke volumes because filling time is prolonged and preload is larger. The Frank-Starling's law of the heart equalizes the output of the right and left ventricle and keeps the same volume of the blood flowing to the both systemic and pulmonary circulations. If the left side of the heart pumps a little more blood than right side, the volume of the blood returning to the right ventricle, venous return increases. The increase in diastolic volume causes right ventricle to contract more forcefully on the next beat, bringing the two sides back into balance. Now, second factor in measuring or controlling the stroke volume is contractility. The second factor that influences stroke volume is myocardial contractility, the strength of contraction at any given preload. Substances that increase contractility are positive inotropic agents, those that decreases contractility and are negative inotropic agents. Thus, for the constant preload, the stroke volume increases when the positive inotropic substances are present. Positive inotropic agents often promote calcium inflow during the cardiac action potentials, which strengthen the force of next contraction. Stimulation of the sympathetic division of the autonomic nervous system and hormones such as epinephrine and norepinephrine increase calcium level in the interstitial fluid, and drug digitalis all have positive inotropic effect. In contrast, inhibition of the sympathetic division of the autonomic nervous system, anoxia, acidosis, some anesthetics, and increased potassium level in the interstitial fluid have negative inotropic effect. Calcium channel blockers are drugs that have a negative inotropic effect, reducing calcium inflow, thereby decreasing the strength of the heartbeat. Now, after load, ejection of the blood from the heart begins when the pressure on the right ventricle exceeds the pressure in the pulmonary trunk, about 20 mm of mercury, and when pressure in the left ventricle exceeds pressure in the aorta, which is about 80 mm of mercury. At that point, the higher pressure in the ventricle causes blood to push the semilunar valves open. The pressure that must be overcome before a semilunar valve can open is termed as afterload. An increase in afterload causes stroke volume to decrease so that more blood remains in the ventricles at the end of systole. Conditions that can increase afterload includes hypertension, means elevated blood pressure, and narrowing of the arteries by atherosclerosis. We will see what atherosclerosis is. Second factor which makes an impact on cardiac output is the heart rate. Regulation of the heart rate controls it. Among the several factors that contribute to the regulation of heart rate, the most important are the autonomic nervous system and hormone released by the adrenal medulla, that is epinephrine and norepinephrine, which are also called as adrenaline and noradrenaline. Now, nervous system regulation of the heart originates in the cardiovascular center in the medulla oblongata. The region of the brainstem receives input from the variety of sensory receptors and from higher brain centers such as the limbic system and cerebral cortex. The cardiovascular center then, by increasing or decreasing the frequency of nerve impulses in both the sympathetic and parasympathetic branches of the autonomic nervous system.
Proprioceptors that are monitoring the position of the limbs and muscles send an increased frequency of the nerve impulses to the cardiovascular center. Chemoreceptors which monitor chemical changes in the blood and baroreceptors which monitor the stretching caused by the blood pressure in the major arteries and veins. Now sympathetic neurons extend from the medulla oblongata into the spinal cord. From thoracic region of the spinal cord, sympathetic cardiac accelerator nerve extend the SA node, AV node and most portions of the myocardium. Impulses in the cardiac accelerator nerve trigger the release of norepinephrine or noradrenaline. In SA node and AV node fibers, the heart rate increases rapidly. Noradrenaline enhances calcium entry through the voltage-gated slow calcium channels, thereby increasing contractility. The result is a greater ejection of the blood during systole. With maximal sympathetic stimulation, however, heart rate may reach to 200 beats per minute in a 20-year-old person. The maximal heart rate declines with age. As a rule, subtracting one's age from the 220 provide a blurred estimate of the maximal heart rate in beats per minute. Then parasympathetic nerve impulses reaches the heart via right and left vagus nerve. They release acetylcholine, which decreases heart rate by slowing the rate of spontaneous depolarization in the atorhythmic fibers. A continually shifting balances exist between the sympathetic and parasympathetic stimulation of the heart. At rest, parasympathetic stimulation predominate. The resting heart rate about 75 beats per minute is usually lower than the atorhythmic rate of the SA node, about 100 beats per minute. Certain chemicals influences both the basic physiology of the cardiac muscles and heart rate. For example, hypoxia means lowered blood oxygen level, and acidosis by means low blood pH, and alkalosis means blood pH is increased, all depresses cardiac activity. Several hormones and cations have major effect on the heart. Hormones, adrenaline and noradrenaline, they increase both heart rate and contractility. Exercise, stress and excitement cause the adrenal medulla to release more hormones. Thyroid hormone also enhances cardiac contractility and increase heart rate. Some cations, ionic imbalances can quickly compromise the pumping effectiveness of the heart. In particular, the relative concentrations of three cations, calcium, potassium and sodium, have large effect on the cardiac function. Elevated blood level of the potassium and sodium decreases heart rate and contractility, and excess of the sodium blocks calcium inflow during the cardiac action potentials, thereby decreasing the force of contraction. Then age, gender, physical fitness, body temperature also influences resting heart rate. A newborn baby is likely to have the resting heart rate over 120 beats per minute. The rate then declines through the childhood. Senior citizens may develop a more rapid heartbeat. However, adult females often have slightly higher resting heart rate than adult males. Increased body temperature, as occurs during the fever or strenuous exercise, causes SA node to discharge impulses quickly and thereby increasing heart rate. Decreased body temperature decreases heart rate and strength of the contraction. Then we'll see few things about the pulse, about which we are going to study in detail in practical. Radial pulse. The alternate expansion and recoil of the elastic artery after each systole of left ventricle create a traveling pressure wave is called pulse. The pulse is strongest in the arteries closest to the heart, becomes weaker in the arterioles and disappear altogether in the capillaries. The pulse may be felt in any artery that lies near the surface of the body, that can be compressed against a bone or other firm structure. If you examine radial pulse, as the heart rate is normal heart rate is 70 to 80 beats per minute,
the pulse rate is the same as the heart rate, about 70 to 80 beats per minute at rest. When this pulse rate increases, the condition is called as tachycardia. Tachycardia is rapid resting heart and pulse over 100 beats per minute. When this pulse rate of 70 to 80 is decreased than the normal, the condition is called as bradycardia. Bradycardia is slow resting pulse rate under 50 beats per minute. Endurance trained athletes normally exhibit the bradycardia. You are aware of the importance of the radial pulse. In Ayurveda, it is called as the Nadi Pariksha, and it is very important part. After examination of the Nadi, we can find out so many things in the patient that we are going to learn in the details afterwards. I am sure for today, now you are aware about the functioning of the heart, how the cardiac cycle takes place, then heart sounds are produced and listened, how the radial pulse is created at least, and most important part of the cardiac physiology is cardiac output. Again remind, cardiac output depends on the heart rate and stroke volume. So the factors affecting stroke volume and heart rate also affect the cardiac output. This cardiac output is also very much important in the cardiac practices, and even they are also useful for you. So I am sure you understand most of the things. After meeting and classroom teaching, we will have all the ideas clear. Till then, have a good day.